So when I was in school, our textbook taught us about different states of India. But whenever it came to Haryana state, which is in the northern part of India, I barely read good things about the state. Haryana always stood for things like high crime rate, female feticide to lowest sex ratio in the country. And for a longer period of time, I actually accepted what I was being taught. But now, when I've grown up, I believe there is always two parts of the world. And I wanted to experience other parts of Haryana too, which perhaps cannot be found out in the textbook. So Ram Ram everybody, a very sweet greeting in Haryanvi style today. In today's video, I have come to visit Jhajjar, which is the southern part of Haryana, to visit my beautiful friend Manisha's sweet home and to experience diverse culture and livelihood of Haryanvi people. It's around 7 in the morning. The people over here, the first thing they do is that दूध निकालते हैं. And we got to my new friend. He is so excited to see the camera and he wants it. So आंटी अभी यहाँ पे दूध निकाल रही है. So every morning they have a guy as well and also भैंस as well. So that भैंस, are you able to see? He completely, like, he keeps on staring at me the moment I came. I think I came yesterday, but I was not really well, so I just took a rest. And the moment I visited them, they used to just keep on staring at me like that, like who has come. Good morning. Jai Shri Ram. अच्छा लगता है ये. मेरा नाम क्या है? खुशाल. मेरा नाम क्या है? पोनिया. पुनिया. Now auntie is going to pull out the milk from beds. Don't kick me, okay? ये देखा देखिए अभी ये पिएगी बोल. पहले इसको धोते हैं. ऐसे क्यों पिलाते हैं अंकल? ये खुश होके दूध देगी फिर ये. अच्छा, इसको पहले पिलाना पड़ता है. हाँ, थोड़ा थोड़ा पिलाना पड़ता है. फिर ये खुश होके दूध देगी. ओके, इसको पिला रहे देखो. अब खोटू पिएगा दूध. He is insisting to give me the camera, but I can't. I'm so sorry, कुत्तू. बाद में दूंगी, ठीक है? अभी देखो दूध निकालेंगे. वीडियो ठीक है ना? हाँ, फिर पियोगी. या बदमाशी करे. People in Haryana, they live a very simple life. सुबह के करीब 4 या 5 बजे सभी लोग उठ जाते हैं और जो महिलाएं यानी कि विमेन हैं वो सबसे पहले खाना बनाती हैं, फिर कैटल्स को खाना खिलाते हैं, फिर इसके बाद कैटल्स से दूध निकालते हैं एंड देन दिस इज़ हाउ दे प्रोसीड विद अदर हाउसहोल्ड वर्क. कुछ दिखा. मुझे नहीं देखना था. आई थिंक वो वाला ज़्यादा पका है. वो वाला बड़े वाला. हाँ, नहीं पका ना. She is my friend Manni. Like her name is Manisha, but I call her Manni प्यार से. और and we are actually college friends. तो मैं इसके घर पे आई हूँ घूमने के लिए बेशर्मों की तरह. सुमन इसकी छोटी बहन है. हेलो. अभी हम अमरूद तो लेने आए थे पर हमें पका वाला मिला नहीं. पर कोई बात नहीं, हमने कल बहुत तोड़ रखे थे, so it is kept there. And यहाँ पे these people early in the morning they sit like that. फिर कैमरा नहीं दूंगी कोटू. अंकल ये बताओ ये क्या है? इसको बोलते हैं चिलम. ओके. हरियाणवी भाषा में. इस पे डालेंगे हम तम्बाकू. ओके. ये होता है चिमटा. ट्वीजर बोलते हैं, बड़ा ट्वीजर है. हाँ, ट्वीजर.
ढकने के लिए इसको। अच्छा अच्छा। इसको ये ज्यादा गर्म है, इसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे तो पानी डाल रहे। ये ठंडा पानी क्यों डालता है अंकल? इससे ये जल्दी नहीं जलेगा फिर। अच्छा। थोड़ा थोड़ा जलेगा, अगर ज्यादा गर्म होगा तो जल्दी से जल जाएगा ये। ओके ओके। वो फिर इसमें डालते हैं आग के कोयले। कोयले। जी जी, ऐसे ये तैयार हो जाता है। हाँ हमारे हरियाणा में होता है, जो बड़ा होगा उम्र में जी, उसको पहले ये लगाना पड़ेगा। क्यों? बड़े का मान सम्मान के लिए होता है ये। अच्छा अच्छा। जी, ओके जी। ओके। और ऐसे खींचेंगे इसको। अब इसकी सॉरी। ऐसे लगाएंगे इसका। Whatever I have shown just now is not to promote any kind of smoking or drinking or any kind of toxic elements or habits, but to surely like to understand the integral livelihood of pure Haryanvi people, and for them these hookah is a symbol of like respect for the elders, and it's a very important part of their livelihood. That's what I have learned. जहाँ पे रह रही हूँ, सो दिस इज़ देयर लाइक फ्रंट एरिया, जो कि मेरा सबसे फेवरेट एरिया है। तो यहाँ पे बेसिकली इट्स अ कॉमन काइंड ऑफ अ स्पेस। यहाँ पे यू विल ऑल्सो फाइंड दिस स्मॉल चूल्हा। वी आर प्लानिंग टू कुक समथिंग इन दिस कॉमन हर्थ। ये जो मिट्टी का बना है, लेट्स सी, एंड इफ वी कुक देन आई विल शो इट टू यू गाइस। So luckily on that day we were having a feast, and whenever there is a special occasion in a Haryanvi family, तो people usually make पूरी। प्रतिभा क्या बना रही हो? पूरी। इसमें क्या क्या डाला है? इसमें आटा, गेहूं का, अजवाइन है बस, और ऑयल। ओके, हम एक्साइटेड हैं आपका पूरी खाने के लिए। तेल गरम नहीं हुआ? अब हो गया ना? अभी कसर है, अभी नहीं हुआ। ओके। एवरीबॉडी इज स्कैर्ड कि मैं हाथ जला दूंगी। ऐसे छोड़ दे इसके साथ, ऐसे ऐसे छोड़ दे। फाइनली पूड़ियाँ काफ़ी अच्छी बन गई थी, और फिर लोगों को खिला पिलाकर और खुद भी खाकर वी वेंट आउट फॉर अ विलेज टूर। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है बेटा। हाँ जी अंकल जी। Villages in Haryana are closely located to one another. अभी तो मॉडर्नाइजेशन हुई है तो मुश्किल से ट्रेडिशनल हाउसेस देखने को मिलेंगे, बट यस, there are no complexes or market as such to be found out there. ये तो उसकी पोती कौन है? बलबीर की। यार दो या तीन हो? ये तीन, ये मेरी दोस्त है। अच्छा। हाँ। टाटा। प्रसाद, थैंक यू, आई गॉट दिस प्रसाद। यहाँ क्या हो रहा है भैया? किस चीज का? ये बाबा दुर्वासा ऋषि का है ना? हाँ जी। यहाँ पे 68वां तीर्थ है महाभारत काल का। अच्छा। ये देख रही हो ये? हाँ हाँ हाँ। ये तीर्थ राम है साहब। इसको पहले पूरा साफ करेंगे। अच्छा जी। और इसमें साफ पानी डाला जाएगा। अच्छा जी। यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल से लोग फिर देखने आएंगे। अच्छा जी। फिर आना पड़ेगा आपको एक बार फिर।
जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या है आप? मैं अरुणाचल से आई हूँ। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जय। जितनी भी इविल्स या फिर कुछ भी ऐसे बुराई एनर्जी जो है वो सबको हटाने के लिए दे परफॉर्म एक काइंड ऑफ अ रिचुअल जिसको वो लोग कहते हैं हवन। Everybody is looking at me, so we have to go from here. उनको हवन पे कंसंट्रेट करने दो। भागो भागो। मुझे लिटरली ऑनेस्टली नहीं पता था कि दिस प्लेस हैज़ अ वेरी क्लोज कनेक्शन विद महाभारत, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ एंटायर वर्ल्ड। और काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि महाभारत इज़ जस्ट एन मिथ और समथिंग लाइक दैट। आई पर्सनली बिलीव, नो एनी ऑफेंस, आई बिलीव कि महाभारत वॉज अ फैक्ट। अंकल के पीछे में ऐसा है। और ये देख सीधी नहीं हो रही। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। So वहाँ से from the Havan place we went to Manni's old place and from there we came back to this present one where we are staying currently. So I was actually very tired. So I slept for 1 hour. I was supposed to sleep for just 1 hour, but I slept for 2 hours. But then it's okay. So from Manni's old house, we got a very exotic, क्या बोल सकते हैं, very special traditional dress of Haryanvi people that I'm so excited to try on. Let's try some Haryanvi traditional dress. Yes. पहले ज़माने में ऐसे पहनते थे आंटी। हाँ, आप लोग जब छोटे थे तो दादी पहनती थी। दादी पहनती थी। सही कर रही हो? हाँ। इसका फिर अभी क्या बनेगा आंटी? इसकी खिचड़ी बनेगी। ओह, बाजरे का खिचड़ी। अच्छा, it's too heavy. Too heavy. The skirt is actually very much heavy. So originally it used to be like 100 meter of whole dense skirt. So it's actually the one that I'm wearing is the much lighter version of it. So पहले ज़माने में it used to be like very much heavy. Okay, so what I was telling is that so अभी grinding process हो गया and as auntie has told कि यहाँ पे they have put this cow dung cake यहाँ पे इस तरीके से and she has lit the cow dung cake और उसके top of it she has put the container over here and the bajra inside. So it will just keep on slow cooking and after a while once the bajra is been done, the khichdi has been done, they are going to serve. So I'm going to eat it basically. पूरा सफ़र है I'm going to end with this बाजरे का खिचड़ी जोड़ या फिर पूरा जो जर्नी है, इट्स अ वेरी स्मॉल जर्नी। अगर आपको अच्छा लगा है, यू लर्न समथिंग एंड अगर आप चाहते हैं कि आई एक्सप्लोर सच मोर न्यू प्लेसेस एंड लाइवलीहुड ऑफ पीपल, देन डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट डाउन आपको कैसा लगा एंड ऑल्सो शेयर और उसको सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि अगर मैं नए वीडियो लाऊं सो दैट यू गाइस आर नोटिफाइड। तो अभी मैं इसको एंजॉय करती हूँ और आपको मैं अगले जर्नी में मिलती हूँ, ठीक है? अभी के लिए बाय, नमस्ते, थैंक यू सो मच हरियाणा फॉर लविंग मी सो मच, बाय। वो तो कहते थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट की। हाँ जी, भजन तो सुना दे। भजन भी है अंकल जी, आ जाइए एंड वीडियो पर अंकल जी आ गए हैं जी। थाली भर के लाई रखी खिचड़ो ऊपर घी की बाट की
जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी ये आपका लोकगीत है? जी जी नहीं नहीं, जब कान्हा को भोग लगाते हैं ना। ओह अच्छा। थाली का भोग खिचड़ी का भोग लगता है बाबा किशन कन्हैया को। इसलिए पहले कृष्ण भगवान जी को जी पहले जी चढ़ाया। जी जी खिचड़ी का भोग लगता है ये। हाँ। थैंक यू Welcome. शुक्रिया। ओके बाय।